Okay, students of 11th class, Namaskar. Earlier we have done two formulae, that was tan A plus B and tan A minus B. Today I have written cot x plus y or cot A plus B equal to cot A cot B minus 1 divided by cot A plus cot B or cot B plus cot A. Same. And here one more formula is there, cot x minus y equal to cot x cot y plus 1 divided by cot y minus cot x. Here you must remember cot x comes first in the denominator, cot x, cot y minus cot x. Here it hardly makes any difference because there's a plus sign there. Either you can write a cot x plus cot y or cot y plus cot x. These is two more formula we add here. First you have done tan, now it is cot. So the question is tan 4x equal to this one, left hand side, right hand side. We shall take left hand side. Left hand side is tan 4x. Tan 4x means tan 2x plus 2x means tan a plus b. Tan a plus b, if you remember the formula, that formula is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Tan a 2x, tan b 2x, 1 minus tan a tan 2x into tan 2x means tan 2x whole square. You might think that where from the square has come. It has come from 1 minus tan a tan b means tan 2x tan x 2x and tan 2x whole square equal to tan 2x plus tan 2x means twice 2 tan 2x divided by 1 minus tan 2x whole square. I feel this much is clear. Then onwards what we do, we have a formula for tan 2x also. Tan 2x is equal to 2 tan x divided by 1 minus tan square x. This 2 is this 2 and tan 2x is a formula which is equal to twice tan x divided by 1 minus tan square x divided by 1 minus square is there, so we have put square here. Then the formula for this one is tan 2x, same formula, twice tan x divided by 1 minus tan square x. You can see this formula from the book also, and I have shown you earlier in the earlier videos also. 2 2's means 4 tan x divided by 1 minus tan square x divide. This division divides here, then 1 minus, you have to open it. 2 tan x means 4 tan square x, 4 tan square x. This means a minus b whole square, because square is there, a minus b whole square. You do the LCM. 1 or 2 steps I have skipped. 1 means 1 minus tan square x means in the denominator, then this will come a square plus b square minus 2ab, this one, and 2 tan square means 4 tan square x, that is here. So simple. 4 tan x divided by 1 minus tan square x, this will go up and this will go down. 1 minus tan square x whole square divided by 1 minus 6. 4 2 means 6 tan square x plus tan 4x is there. 1 minus, then 1 minus tan square x is there, raised power 1 is 2. 1 will cancel, but 1 will remain there. 1 minus tan square x will remain there. 4 tan x there, 4 tan x is there, and in the denominator, because this goes with one of this factors, two factors are there, 2 square is there, means there remains 1 minus 6 tan square x plus tan 4x. 1 minus 6 tan square x plus tan 4x. If you see the question, in question itself we have to show that this tan 4x equal to 4 tan x divided by into 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus tan 4x. The same thing we have proved here, same thing is there. This one is equal to RHS, hence LHS equal to RHS, hence proved. So this was the question you have to do like this. Now the second part of this question is like this. I should show the second part. Earlier also I should show the graph of this this function y equal to sin x or fx equal to sin x also. Some people write as fx sin x, is same, fx equal to y sin x, but you have to remember the graph here, because this is 0, this one is x-axis, this one is x-axis, this one is y-axis, this one is y-axis. I have done it earlier also, so you have to remember it. So there comes the point 0, this is the point pi by 2, here it is pi, here 3 pi by 2, here 2 pi. Then the graph moves like this up to plus 1, then minus 1, then plus 1, then minus 1, like this. So the graph of this function sin x का function का जो graph है, that is in between 1, that lies in between 1, means greater than minus 1 and less than plus 1. सेम वे देखो, ये minus 1 से नीचे नहीं जाएगा और ये plus 1 से ऊपर नहीं जाएगा,
इसका ग्राफ देखो, यहाँ लाइन अगर लगाएंगे पैरेलल तो -1 एंड +1 के बीच में हमारा ग्राफ पड़ता है। तो इसका पीरियड भी होता है, देखो यहाँ से अगर आपका ग्राफ स्टार्ट होता है तो फिर वहाँ से ही स्टार्ट होता है, ये 2 पाई है, तो मीन्स 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। 2 पाई के बाद इट विल स्टार्ट वंस अगेन गिविंग द सेम सॉर्ट ऑफ ग्राफ एज यू सीन एट 0, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई इसका पीरियड है, बिकॉज 2 पाई इट इज़ पीरियड। अब देखो दूसरी बात है यहाँ याद रखने की, साइन 0 इज़ 0, हियर 0 इज़ साइन पाई इज़ वंस अगेन 0, साइन पाई इज़ वंस अगेन 0, साइन 2 पाई इज़ ऑल्सो 0, सो यू कैन राइट साइन 2 पाई, साइन here sin 0 is 0, sin pi is 0, written there, sin 2 pi is 0, always it come, sin 4 pi is 0, this one is यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई है, फिर यहाँ से पाई बाई 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक 3 पाई, 3 पाई पर फिर 0 है, और साइन पाई बाई 2 देखो, साइन पाई बाई 2 इट इज़ 1, साइन 3 पाई बाई 2, फिर साइन 3 पाई बाई 2 ये पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू -1 क्योंकि नीचे की तरफ है, here in this towards y axis, but on the negative side, that is why it comes out to be -1 here. So this is the graph of sin x. Then second graph is there, you have to remember this one also very important, y equal to cos x, y equal to cos x का ग्राफ कुछ यूं पड़ता है, इस तरह से पड़ता है, इस तरह से पड़ता है, उसमें थोड़ा अलग सा था, ये देखिएगा उसकी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती, कम्स आउट टू बी 0 से, लेकिन इसकी यहाँ से 0 पर ये 1 आता है। अब इसमें भी देखिएगा ये भी -1 से घूमता है अप टू 1, इट ऑल्सो इज cos x इज lesser equal to 1, means the graph falls in between -1 and +1, so the range is in between -1 and +1, and the domain is the whole real number, real axis, every number on the real axis is the domain, that means real numbers, all real numbers. So here also 0 पर आपका कितना आता है, cos 0 पर 1 आता है, cos pi by 2 पर 0 आता है, cos pi कितना आता है -1, यहाँ पर -1, cos 3 pi by 2 का फिर 0 आता है, फिर cos 2 pi पर फिर 1 आता है, मीन्स इसका द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू cos x इज ऑल्सो 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद ये रिपीट होता है ऐसे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे मार्क द एरो हियर, बिकॉज दिस इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई है, इसका भी पीरियड 2 पाई है, दैट मीन्स पीरियड के बाद फिर वहाँ उसी तरीके का ग्राफ भी आपको मिलेगा, दैट इज वाई। देन पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, आई हैव रिटन इट, पीरियड इक्वल टू 2 पाई, cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 1, cos 2 पाई बाई 2, cos 2 पाई बाई 2 कितना देखो 1 है, फिर cos 90 देखिए, cos 90 पर ये 0 आता है यहाँ पर, फिर cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 देर 0 आता है, इस तरह से ये इसके सारे वैल्यूज़ है। और वन मोर पर्टिकुलर फॉर्मूला इज देयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, if sin theta equal to sin alpha, then theta equal to n pi plus -1 into alpha, like this. Then same way you have to remember this one also, if cos theta equal to cos alpha, then theta equal to 2 n pi plus minus alpha, and belongs to integers. Then one again formula is there, sin theta equal to sin tan alpha, if tan theta equal to tan alpha, not sin, tan theta equal to tan alpha, then theta equal to n pi plus minus alpha, and belongs to integers. So these three formula are very very important, and you have to remember all these formula, that is why I have highlighted them. These, this not this one, this one is the formula which you have to remember. So this is the graph. Then there remains the graph of, I'll show it here, fx equal to tan x is there, you have to remember the graph of this function also. Then cot x is there, uska bhi, then cosec x is there, uska bhi, then sec x is there, I have sec x of theta. These formula I have not shown here, I have shown only two, that is sin x and cos x. Rest of the formulae are on your book at page number 60. You can go to page number 60 and watch all the graphs of these trigonometric functions. You may understand a bit at the first instance, later on you try to practice it and you will get it. थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ समझ तो आ ही जाएगा, वरना एक पेज में और 5 मिनट के वीडियो में कितना ही समझा सकता है इंसान, तो समझाना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको करिएगा घर पर, बाकी फंक्शंस का ग्राफ आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तो आई फील यू विल फील very comfortable with these graphs only when you see look these graphs from your chapter at from your chapter trigonometry at page number 60. Okay, thanks a lot.